किडनी स्टोन एक ठोस पदार्थ का टुकड़ा है जो किडनी में तब बनता है जब सामान्य रूप से यूरिन में पाए जाने वाले सब्सटेंस अत्यधिक केंद्रित हो जाते हैं। किडनी स्टोन मूत्रपथ के सबसे आम विकारों में से एक है। प्रत्येक 20 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी किडनी स्टोन हो जाता है। चलिए किडनी स्टोन के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। Intermittent colicky flank pain radiating to lower abdomen or groin. Nausea and vomiting. Dysuria. Urinary urgency. Restlessness. Hematuria. चलिए किडनी स्टोन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री। हाइपरकैल्शिया, cystic kidney disease, hyperparathyroidism, renal tubular acidosis, dehydration from low fluid intake, high dietary intake of animal protein, Crohn's disease. चलिए किडनी स्टोन का डायग्नोसिस कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। Detailed medical and dietary history. Medical conditions. Nutritional factors in diet. Medications, probenecid, some protease inhibitors, lipase inhibitors, triamtrene, chemotherapy, vitamin C, vitamin D. Serum chemistries. Electrolytes, sodium, potassium, chloride, bicarbonate, calcium, creatinine and uric acid. Urinalysis. Dipstick and microscopic evaluation. Review of imaging studies. Plain radiography. Ultrasonography. CT. 24 are urine profile. Stone analysis. अब जानते हैं कि किडनी स्टोन को कैसे मैनेज किया जाए। दर्द से राहत के लिए IV NSAID एंड ओपियोइड्स और डाइट थेरेपी, फार्माकोलॉजिक थेरेपी। आइए डाइट थेरेपी के बारे में जानें। Fluid intake that will achieve a urine volume of at least 2.5 liters daily. Calcium stones and relatively high urinary calcium limit sodium intake and consume 1000 to 1200 milligrams per day of dietary calcium. Calcium oxalate stones and relatively high urinary oxalate. Limit intake of oxalate-rich foods and maintain normal calcium consumption. Calcium stones and relatively low urinary citrate increase. Intake of fruits and vegetables and limit non-dairy animal. Protein uric acid stones, calcium stones and relatively high urinary uric acid limit intake of non-dairy animal protein. Cystine stones limit sodium and protein intake. चलिए फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। Thiazide diuretics, high or relatively high urine calcium and recurrent calcium stones. Potassium citrate, recurrent calcium stones and low or relatively low urinary citrate. Allopurinol, recurrent calcium oxalate stones who have hyperuricosuriah and normal urinary calcium. Thiazide diuretics and or potassium citrate, recurrent calcium stones in whom other metabolic abnormalities are absent or have been appropriately addressed and stone formation persists. Potassium citrate, uric acid and cystine stones to raise urinary pH to an optimal level. Cystine binding thiol drugs, tiopronin, cystine stones who are unresponsive to dietary modifications and urinary alkalinization, or have large recurrent stone burdens. Acetohydroxamic acid residual or recurrent struvite stones only after surgical options have been exhausted. Should not routinely offer allopurinol as first-line therapy to patients with uric acid stones. Other procedures. Lithotripsy. Percutaneous nephrolithotomy. Ureteroscopic surgery.